Good evening, students. In the last lecture, we have already discussed about the strategy, strategic management introduction, and also we have discussed about what is business policy and all. In today's session, we are going to discuss about meaning, definition, and importance of strategic management. Meaning, definition, and importance of strategic management we are going to discuss. So, what is strategic management? Strategic management is the set of managerial decision. जब बहुत सारे managerial decision एक साथ हम लेते हैं, it becomes a set of managerial decision and action that determines the long run performance of a corporation. मैंने पहले ही बताया, when we speak about the strategy, it is a long term. जो छोटे छोटे समय के लिए होता है उसको प्लान कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं. तो लॉन्ग टर्म का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. इट इंक्लूड एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंट दो टाइप के होते हैं, कंपनी के बाहर का एक और कंपनी के अंदर का एक. तो इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट. देन कम्स द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, लॉन्ग रेंज प्लानिंग. मैंने पहले ही कहा शॉर्ट टर्म प्लानिंग को प्लान कहते हैं, लेकिन जब प्लान लॉन्ग टाइम के लिए होता है उसको लॉन्ग टर्म प्लान या तो स्ट्रेटेजी कहते हैं. देन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. मैंने जब ये मॉड्यूल स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर लिया था, तभी मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है. एक तो है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, कैसे स्ट्रेटेजी चलाएंगे, एंड स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, कैसा स्ट्रेटेजी हम कर रहे हैं वो देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इवेल्युएट करना पड़ेगा. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन. Evaluation is also known as a controlling the strategy. The study of strategic management therefore emphasizes on monitoring and evaluating the opportunities and threat. फिर से बोलता हूँ, monitoring and evaluating, controlling and calculating. कितना अपॉर्चुनिटी मार्केट से अपने पास आने वाला है और कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर है, किससे हमें थ्रेट्स है, किससे हमें बच के रहना है. इन द लाइट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. देखो चार बातें यहाँ पे कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट होती है. इसको शॉर्टकट में कहा जाता है SWOT. स्ट्रेंथ S, वीकनेसेस W, अपॉर्चुनिटीज O एंड थ्रेट्स T. SWOT. ये चारों का जो स्टडी होता है कंपनी के बारे में, उसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. So what is strategic management? Strategic management can be defined as the art and science of, मैंने पहले भी बताया, formulating, implementing, evaluating the cross-functional decision, company के decision, and that enable an organization to achieve its objective, जो कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हेल्प करता है. ये डेफिनेशन में हमने देखा है, this definition implies strategic management focuses on integrated management. मैंने पहले ही बताया उसके फीचर्स में था integrated approach. It covers everything. It covers marketing, it covers finance, accountancy, production, operation, research and development, information system. कुछ भी करो, सबको साथ में लेके चलो और अपने कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल टारगेट पूरा करो. That is what the ultimate objective of strategic management. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर डेफिनेशन में बात करूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फॉर्मुलेटिंग एंड अराइविंग स्ट्रेटेजिक चॉइस थ्रू क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव. मैंने बताया था आपको, कोई भी प्लान कंप्लीट करने के देयर आर 2 to 3 वे. वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट वे. तो पहले ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए एंड इंप्लीमेंटिंग देम टू मीट द सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उसे हमें फॉलो अप करना है. अनदर डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद हेलो, हाँ, कैन यू सी द पावर पॉइंट स्क्रीन? आप देख सकते हो पावर पॉइंट स्क्रीन? आप लोग पावर पॉइंट स्क्रीन देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? वन सेकेंड. ओके, अभी देख पा रहे हो बराबर से?
हमने डेफिनेशन देखा। Strategic management is concerned with the making decision about the organization's future direction, भविष्य के बारे में सोचना है, by implementing those decision, और वो डिसीजन को हमें पूरा करना है। What are the importance of strategic management? क्यों करते हैं हम strategic management? Strategic management help us to do the proactive. Proactive का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कभी कोई बात का रिएक्शन नहीं देना है आपको। When you react somebody, you will get the wrong answer. When you help the people to do the things in connection, you will get the positive. तो proactive approach होना चाहिए। You have to make the improve understanding of competitor strategy. Competitor का strategy को समझने के लिए strategic management पढ़ना जरूरी है। Awareness of threats, awareness of challenges, मैंने पहले बताया। लोग बदलाव को अपनाते नहीं है, रेसिस्ट करते, तो वो बदलाव को लोगों को अपनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। एनहांस प्रॉब्लम प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज, एनहांस प्रॉब्लम प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज यानी कि आपको अपने प्रॉब्लम से बचने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। इनिशिएट एंड इन्फ्लुएंस द फॉर्म्स एक्टिविटी, फॉर्म्स की एक्टिविटी को आगे लेके आना है। एंड फॉर्मुलेट द बेटर स्ट्रेटेजीज, और स्ट्रेटेजी सिस्टमेटिकली होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए। बेटर स्ट्रेटेजी हमें फॉर्म करना है। आज कुछ और इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, इंप्रूव कंडीशन एंड कंट्रोल, मिनिमाइजिंग द एडवर्स कंडीशन एंड चेंज, मिनिमाइजिंग द एडवर्स कंडीशन एंड चेंज, कोई भी खराब कंडीशन है, कोई भी खराब अवस्था है, उसमें से अपने को इंप्रूव करना है। एंड टू टेक अ डिसीजन दैट बेटर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें हेल्प करे वैसा डिसीजन हमें लेना है। सो दोस्तों, इन शॉर्ट आज का मैंने सेशन जो रखा था, मेनली आई हैव केप्ट द सेशन टू make you people aware about what is strategic management. Again, I am telling you, strategic management is nothing but a long-term planning. It is an integrated approach. It covers environmental scanning, both internal and external. It helps in taking a decision for the long term. It helps in sharing the information for the long term. It covers various areas, various fields, various departments. It covers all the area including marketing, finance, accounting, production, operation, research and development, and also information system. It covers three important aspects, that is formulating, implementing and evaluating the opportunity. तीन important aspect के ऊपर वो ध्यान देता है। स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटेजी कैसे पूरा करेंगे, और स्ट्रेटेजी का चेक करेंगे कि स्ट्रेटेजी बराबर बनाया है या नहीं बनाया। So formulating, implementing and analyzing, ये तीनों एरिया के ऊपर। हेलो, कैन यू हियर मी बराबर से? आप सुन पा रहे हो बराबर से? यस। So it covers the three important area: formulating, implementing and evaluating. Okay, I see Rohit Kharatmol is saying voice is breaking. Are you able to hear me properly? Yes. So this is what the part of strategic management. So again I am telling you, strategic management जब मैं बात करूं तो strategic management is a defined as strategic management is concerned with making decision about an organization's future direction and implementing those decision. हमेशा भविष्य का, आने वाले 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का सोच के हमें चलना है, और उसको सोच के हमें स्ट्रेटेजी बनाना है। बिकॉज शॉर्ट टर्म प्लान हमारा छोटा गोल कंप्लीट कर सकता है, बट इफ यू हैव टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्लान, you have to go with the whole strategy and you have to plan for the long strategy. So that is what this particular thing is going to be say about. Now जब मैंने उसकी importance की बात की, तो importance के अंदर सबसे important है, it should be proactive. Proactive का मतलब होता है ध्यान से सुनना। Either you can be reactive or either you can be proactive. आपको किसी ने कुछ बोला कि तू जिंदगी में कभी तेरे को नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि तुझे कोई जॉब देगा, तो तुमने रिएक्शन दिया, जा तू खुद का कर, पहले तुझे जॉब मिला है क्या, पहले वो तो सोच। ये आप जो बोल रहे हो उसका मतलब है रिएक्शन। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव पर्सन हो तो आप प्रोएक्टिवली क्या बोलोगे मालूम है क्या? नो प्रॉब्लम, मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इतना पता है कि मैं मेरा जॉब लेके रहूंगा, मुझे जॉब जरूर मिलेगा, और वो समय समय पे पता है। ये सी
Why to answer every nonsense question? Why to answer any nonsense question? We should not answer any nonsense question. Hello? Hello? Can you hear me? See, we should not answer every nonsense question. We should answer to the question which is very logical, which is very practical, and which can be resolved easily. So, can you hear me properly now? Sana? Rohit? You can reply by saying yes or no, so I understand and go ahead. Okay, good. Thank you. Maybe little bit of a network problem somewhere, I believe, today from here or something like that. Let's see. I will try not to break. Again, it is breaking. Okay, you can hear me now. Good. So, proactive in shaping the firm's future, improve understanding, enhance the awareness of threats. मैंने पहले ही बताया threats, opportunity, weakness, ये सारी चीजों को हम लोग को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सीखना पड़ता है. Enhance problem prevention capabilities, initiate and influence the firm's activity, formulate the better strategies, systematic, logical, and rational. Then comes identification of opportunity. The most important function of in a strategic management is to search the opportunity कि कहाँ पे हमारी कंपनी का गलती हो गया है, कहाँ हमारी कंपनी बराबर काम नहीं कर रही है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. मैंने फिर से बोलता हूँ, 4 इंपॉर्टेंट एरिया है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. SWOT, strength, weakness, opportunity and threat. You have to find out all these 4 things. You have to search all these four things. The second point is objective view of management problems. Objective view of management problem. Management related जो भी problems होते हैं उसको हमें objectively देखना है. हर चीजों को सिर्फ हम लोग ऐसा theoretically और ऐसे बोलने के लिए बात करेंगे तो सोल्व नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के बारे में सुना कि ये पर्सन बीमार है, तो क्या उधर प्रॉब्लम सोल्व हो गया? आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, सही डॉक्टर के पास मिलाओ, उसका इलाज चालू कराओ, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. सिर्फ बातों करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. देन यू हैव टू इम्प्रोवाइज द कोऑर्डिनेशन, यू हैव टू इम्प्रोवाइज द कंट्रोल, you have to minimize the adverse condition and change. You have to minimize the adverse condition. जितनी भी खराब परिस्थिति है उससे ऊपर आना है, चेंज होना है, बेहतर होना है, अपने आप को चेंज लाना है. The decision that better support the objective. और ऐसे डिसीजन लेने लाइफ में जो अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे. मैंने पहले कहा, हर एक कंपनी का विजन होता है, वो विजन पूरा करने के लिए मिशन होते हैं, वो मिशन पूरा करने के लिए प्लान बना ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लान होते हैं. तो हर एक प्लान पूरा होगा तब जाके विजन कंप्लीट होगा. तो ऐसे डिसीजन हमें लेने जो हमारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करे. उसके बगैर हमारे कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती. जब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is framing the plans and policy for overall company, not for the individual. वो सबके लिए पॉलिसी बनाता है, एक के लिए नहीं. It designs the policy for every single area in the company, every single part of the company, everywhere it frames the policy, and it helps in taking the decision. That is why the 4 important area मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, strength, weakness, opportunities and threat. ये चारों चीजों का आपको बहुत ही strongly ध्यान में रख के चलना है. So, when we speak about the strategic management के अंदर मैंने पहले ही बताया एक वर्ड आता है strategy. Strategy is a plan. लेकिन जब छोटा होता है उसको प्लान कहते हैं. When it's become a bigger, when it become for everybody, it becomes a strategy. Strategy is a long-term plan, and that we have to complete. And that is what we can call it as a strategic management. Then, dear student, आज के आपके 2 क्वेश्चन हो गए. Explain the meaning of strategic management and explain the definition of strategic management. और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, what are the importance of the strategic management? What are the importance of the strategic management? हेलो, हाँ, what are the importance of strategic management? उसके बारे में भी हम देखेंगे. मैं आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में, सॉरी असाइनमेंट में दे दूंगा. So students, what exactly we need to understand is that the basics of strategic management, the definition and the importance of the strategic management that we have discussed in the today's lecture. So here I'm stopping my share and will like to discuss with you people about the topic. If you have any doubt
you can just mail it to me. Mail ID is given to you. I will definitely reply on the given mail ID as per your need. We will